एबे मु टिके खाली गाइड कर दोची तुम मान को देखो स्टूडेंट्स समझते एथिक्स रो हमर जोटा टेस्ट हेतिला स्क्रीन विजिबल समझ को Yes, sir. ओके ठीक अछि सो देखो तमर जो टेस्ट नंबर आई थिंक एटा 8 नंबर टेस्ट हेतिला सेक्शनल जोटा एटा साधारणतः केमती थाए तमर जो क्वेश्चन थिबो बेसिकली तमर टोटल 12टा क्वेश्चन थाए ओके एथिक्स पेपर रे यूपीएससी पैटर्न रो जोटा এবং সেই 12টা কোশ্চেন রে দুইটা সেকশন থিবা ডিভাইডেড ইনটু টু সেকশন तमरो क्वेश्चन जेतल पढिबा इट स्पेसिफिकली तमरो ଗୋଟେ इन्स्ट्रक्शन दिया है कोन कि एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक अप बहुत पिला देखु छी साधारणतः तमे ए जिंसटा फॉलो करूनो देखो तमे आंसर ता लिखुछो सपोज गोटे आंसर एंड हो गोटे आधा पेज रे रही गला तो इमीडिएटली तमे जो बाकी जो पेज आइदर तमे सेइठू नेक्स्ट क्वेश्चन रो आंसर स्टार्ट करो किबा जदी तमे ब्लैंक छाडो ताको काटी दियो मु बहुत पिलांग एटा भूल देखि छी कि जो माने कि ब्लैंक छाड दोछथि सेटा गोटे इंस्ट्रक्शंस जोटा तमे तुमको कोहा है से इंस्ट्रक्शन ता तुमको फॉलो करिया पड़िबो ओके नाउ आसो जिबा हमर क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन तमे क्लियरली तमे एडी जानलो मॉडल आंसर ऑलरेडी मु देई दीची तमरो आई थिंक आज रात रे तमे पाई जीवो मॉडल आंसर ता तम स्टूडेंट पोर्टल रे तमे डाउनलोड करिकि ताको प्रिंट आउट कर दबो तो गोटे ओवरऑल गोटे आइडिया भी हे जीवो जे तमरो केमती कोन क्वेश्चन आंसर लिखिया पड़िबो तो देखो तमर जो दीटा सेक्शन अछि साधारणतः सेक्शन ए रो जो क्वेश्चन गुडा अछि पाखा पाखी सेटा 10 मार्क रो क्वेश्चन थाए 150 वर्ड्स रे तमे लिखिबो जोटा कि सेक्शन बी अछि से सेक्शन बी गुडा बेसिकली केस स्टडी थाए ओके केस स्टडी गुडा रा आंसर केते पाखा पाखी 250 शब्द और यार मार्क होची 20 तो ए होची तमरो सिस्टम आउ आमे ट्राई करिबा गोटे गोटे जिंस आमे जानिया पई आउ केमती कोन आंसर लिखिबा मु पूर्वर गोटे जिंस कहि छी कि एथिक्स रे देयर इज नो राइट आंसर देयर इज नो रॉन्ग आंसर एथिक्स रे ऑलवेज सब बेले मन रखो कि जदी तमे गोटे आंसर लिखुछो ट्राई करो से आंसर टाको जस्टिफाई करिया पे कि तमे ए जो स्टैंड ता नेलो काहे कि नेलो तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एटा केमिति कोन हेई परिबो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जोटा पचार जी कोन पचार जी कि human values continuously adapt to the winds of change or are some anchors in the moral sea unwavering and eternal explore this dichotomy and share your perspective with justification to support your stance बुझा पे ट्राई करो कौन पचार तुमको से कहूची कि ह्यूमन वैल्यूज जोटा दैट इज कंटिन्यूअसली अडॉप्ट टू द विंड्स ऑफ चेंज रे एठी विंड जो शब्दटा यूज करे ता माने नो छे पवन ता तो कहूची कि हमर जो वैल्यू सिस्टम अछि ए वैल्यू सिस्टम ता सबु बळे टाइम सहित सिचुएशन सहित एटा अडॉप्ट हे आसुची और आर सम एंकर्स इन मोरल सी तार अर्थ मोरालिटी भितरे हमर ह्यूमन वैल्यूज केमिति निजु को अडॉप्ट करूची सो तुमको पचार कि एटा जस्टिफाई करो और तमरो निजरो जहां भी सपोर्ट तमे ओपिनियन दबा पे चाहो छ तमे मैक्सिमम 150 वर्ड भितर तमे लिखो केमिति लिखिबो तमे डायरेक्टली टू स्टार्ट करि परिबो गोटे इंट्रोडक्शन टाइप रो कहि परिबो कि जहां पचार तमे डायरेक्टली स्टार्ट करो ह्यूमन वैल्यूज सिस्टम रिजेंबल्स अ शिप traversing the ever changing seas of life with some values like integrity compassion serve as steady anchors देखो तमे एठी गोटे जदी टिके तमे जदी पॉइंट आउट करिवा मु तमु कहि दोची इंट्रोडक्शन टा रे सेही सब शब्द गुडा यूज करा जेंते शिप कोहा गला रिजेंबल्स विथ शिप ट्रांसफरिंग एवर चेंजिंग सीज ऑफ लाइफ सम वैल्यू लाइक इंटीग्रिटी कंपैशन सर्व एज स्टडी एंकर्स जो जो इंट्रोडक्शन टा रे जो वर्ड गुडा मेंशन करा हैची तमे सेही शब्द गुडा को भी मेंशन करि परिबो जेतो तमे आंसर लिखिबो ओके आउ मु कहूनी जे मॉडल आंसर रे जेमती माने दिया जाई छी सेही शब्द गुडा तमे घोसी मन रखो देखो समस्त को गोटे लिखिबार स्टाइल अछि एबे मु जो स्टाइल रे लिखिबी गोटे आंसर मे भी तमे से स्टाइल रे न लिख पारो तमे जो स्टाइल रे लिखिबो मु से स्टाइल रे न लिखि पारे तो एंड शब्दर जो चयन अछि माने चूज अ वर्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन
तो किए जदि बहुत गोटे माने बेटर वे रे बोम्बास्टिक वर्ड लिखि देछि त माने नुह जे सी अधिक मार्क पाइजिवो सेमति के भाबोनी तमे जहां भी तमे लिखिया पे ट्राई करूछो नीट एंड क्लीन गोटे मेंटेन करो मु देखि छी किछि किछि स्टूडेंट्स मानकर आंसर गुडा बहुत से माने गाजिया करछन बहुत कटाकटी करछन डोंट डू दैट गोटे इंप्रेशन मार्किंग बोली गोटे अछि आ जदि जेतेबेले तमे पैराग्राफ लिखुछो मिनिमम गोटे गैप तमे मेंटेन करो ओके जो मिनिमम गैप रहिबा दरकार से गैप गुडा टिके मेंटेन करो सो दैट जे इवैल्यूएटर देखिबे ताको भी भल लागियो देखिया पई तमे बुलेट पॉइंट लिखि परिबो पैराग्राफ लिखि परिबो सेटा तम ऊपर डिपेंड करे आ तुमको जोटा ठीक लागुची तुम सेटा करि परिबो सो ए क्वेश्चन टा हमें देखिबा on one hand core values like justice fairness and respect for life remain relative constant across cultures time periods अर्थ ये कहूची कि गोटे गोटे साइड जदि हमें जस्टिस देखिबा फेयरनेस देखिबा रेस्पेक्ट देखिबा फॉर लाइफ ये आज बोली नुह पुराना समय रो यू नो लक्ष लक्ष कोटी कोटी वर्ष समय रो एई जिंस गुडा सब बेले कांस्टेंट ही गसे जस्टिस रो मीनिंग तार जो फाउंडेशन वैल्यूज अछि व्हाट इज जस्टिस सेटा केबे भी चेंज हेनी तार फॉर्म चेंज हे पारे बट फाउंडेशनल वैल्यूज जोटा कोर इनग्रेडिएंट्स जोटा सेटा केबे भी चेंज हेनी तो एठो हम कोन जानछे हाउएवर ह्यूमन वैल्यूज आल्सो एक्जिबिट अ रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर एडॉप्शन हमर जो ह्यूमन वैल्यूज गुडा जेमिति टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होची सोशल मूवमेंट होची एंड इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स नेसेसिटेट एडजस्टमेंट टू एस्टैब्लिश वैल्यूज हमर जो वैल्यूज गुडा अछि ह्यूमन वैल्यूज एबिका डेट रे जहा जो गति रे चलीची जो दुनिया रे चलीची सेही गति को देखि कि हमहु कोन करिया पड़ियो हमको एडजस्ट करिया पड़ियो ओके value system occupies a dynamic space between stability and change देखो this is how you should conclude conclusion से कौन पचारछि से क्वेश्चन तुमको पचारछि तुम प्रथम कोन कलो ब्रीफ गोटे इंट्रोडक्शन देलो this is intro it is understood that tomorrow question ro pratham paragraph ta it is considered as introduction then this is a body part okay then this is a your conclusion the conclusion lecture anchored by unwavering principles it simultaneously adapts to the evolving current of life ensuring our moral compass remains relevant and effective in navigating the complex seas of modern world ओकाटा बुझि परछो सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मु ट्राई करछि तम मानको जोटा लेखि दवा पई मॉडल आंसर रे सेतरे बेसिकली मु कहिबी जे सेही शब्द गुडा ही यूज करा है जे जोगुडा के क्वेश्चन रे पचारछि आ गोटे जिंस मु देखिछि मैक्सिमम पिलांगर गोटे भूल होउछि कोठी कि तमे इंट्रोडक्शन तो दे दोछो बॉडी लिखि दोछो बट यू आर नॉट कंक्लूडिंग योर आंसर मु एटा गोटे भूल देखिछि मैक्सिमम पिला माने कंक्लूड करूना ताको छाड़ दोछन्ते पॉजिटिव नेगेटिव लिखि दिबे बॉडी रे तापर किछि नै तो एटलीस्ट आंसर ता सी गोटे बैड कंक्लूजन इज वर्स्ट देन अ गुड इंट्रोडक्शन सब मन रखो जदि तमरो इंट्रोडक्शन भलो बॉडी भलो आउ लास्ट को जदि तमरो कंक्लूजन नाही कि कोन हबो आगु को कोन कंक्लूड करूछो देन इट विल बी इंप्रेशन ही खराब हो जो सेठी ऑलराइट तो सब ट्राई करो कंक्लूजन को ट्राई करो यू दिस इज मैंडेटरी कि तमे कंक्लूजन दबा को ही पड़िबो गोटे दिन लाइन भी देई परिबो एमती नेसेसरी नुह कि बहुत सारा तुमको लिखिया पड़िबो 1 to 2 लाइन्स देले भी चलिबो सो ये होची तमरो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पाखा बाकी 150 वर्ड से तुम एठी आराम से लिखि परिबो आ किछि किछि इंपोर्टेंट मु कहि दोची एबे देखो एथिरे हम किछि कोड यूज करने एबे किछि किछि कोड रो विषय हम तुमको कहूछ देखो सपोज दिस इज द क्वेश्चन पचासी कोन The principle of human being as ends in themselves has resonated across philosophical and ethical discourse. Unveil the meaning and the significance of this statement, exploring its implications in today's technology-driven and economically focused world. कौन क्वेश्चन कि जो मनुष्यर प्रिंसिपल ends in themselves ओके या ऊपर से पचार कि आज का डेट रे एटा केते रिलेवेंट अछि ends in themselves तो यार एटा की प्रथम तो जानिया पड़िबो कि हु हैज सेड दिस इट इज सेड बाय हुम इमानुएल कांट सो एंड्स इन देमसेल्फ concept is championed by thinkers like Immanuel Kant asserts that each individual possesses inherent dignity and worth independent of their utility or contribution to the society this intrinsic value demands their respect and prohibits their mere instrumentalization for achieving their goals
ओके एई आंसर टा आई थिंक मु तो ना डिस्क्लोज करिया पे चाहूनी बट आज मु जनकर खाता देखुतली मॉर्निंग टाइम रे आई थिंक सी इज अ लेडी बहुत सुंदर लिखी जंदी खाता को सो सी गॉट अराउंड आई थिंक 6.57 मार्क तांको मिली छी बहुत सुंदर भाବରେ लिखी जंदी जहा जहा डिमांड अछि तो ट्राई करो एटलीस्ट तमे एंड्स इन देमसेल्फ किए कहि चंती थिंकर किए तो ट्राई करो से सब जिंस गुडा को टिके जानिबा पाई सर एटा जदि एंड नंबर ने पड़िबो सर जो एमएल कैंट से जो लिखिछन एटा नंबर ने पड़िबो तेबे हाँ कोन मु सर कहि करबा दउछि नहीं न मन पड़ले तो तमे छाड़ दबो बुझि परछो न मन पड़ले आ कोन लिखि परियो कि एमती तमे जनरलिस्टिक लिखिबो बट जी लिखिथिबो ताको तमठु एक्स्ट्रा गोटे मार्क मिलिबो कथाटा बुझी सेतिकी आउ मु कहूनी जे सबु जिंस तुमको मन रखिया पड़िबो किंतु किछि किछि फेमस कोट अछि मु देखैबी आज गोटे पीडीएफ तुमको देखै देबी किछि किछि फेमस कोट अछि से फेमस कोट गुडा को टिके ट्राई करो मन रखिया पे एंड्स इन देमसेल्फ बाय इमानुएल कांट एटलीस्ट ए सब जिंस गुडा सबले मन रख एंड जोटा कि तुमको हेल्पफुल हबो तमे जदि चाहूछ कि नाही सुनो तमे ए जो 683 पोस्ट तमर अछि ओसीएस 21 रो तमे ही काहे कि पाइबो 22 जोडा चाहछि तमे काहे कि पाइबो तो तमे एथि पय पाइबो काहे तमे एक्स्ट्रा किछि गोटे जिंस बेटर करिछो जो माने पाइबेनी ओके सेति पय एबठु ही तमे माइंडसेट करिकि चालो सो आउ कोन आइट लिखि परिबो इन आवर टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड economical focused world the principle carries immense significance कौन technological advancements while enhancing our lives can often prioritize efficiency and productivity over human well-being अर्थ नॉर्मली कौन हुए जितने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड रे साधारणतः आम एफिशिएंसी को आम अधिक फोकस करू प्रोडक्टिविटी को आम अधिक फोकस करू कंपेयर टू ह्यूमन वेलबिंग किंतु आजिका डेट रे ह्यूमन वेलबिंग मनीष भल रहिले सिना से अधिक एफिशिएंसी देई परिबो ओके तो एठी हमको जानिया पड़िबो द प्रिंसिपल एंड्स इन देमसेल्फ एक्ट्स एज अ काउंटर पॉइंट टू दीज एक्सेसेस इट रिमाइंड्स अस that the human beings are not merely cogs in the machine of progress. Their inheritance values transcends their economical and technological utility. अर्थ कि human values जो गुड़ा it is not limited to only creating best technology or creating money in terms of economics. Okay? आमे कौन कहिबा कि ends in themselves human values are beyond technology and beyond the economical factors. तो we should always give priority to the human values. तो सेही जिंस तुमको कौन करिया पड़िबो एटा तमे लिखिया पड़िबो ओके नाउ आ गोटे देखिबा आ गोटे क्वेश्चन सेमति मु तुमको कहूची लेट्स सी लेट्स से गोटे क्वेश्चन देखिबा हां एटा गोटे देखिबा देखो क्वेश्चन पचार जे कोन व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स देखो मा गोटे जिंस तुमको सजेशन कहबी मु खाता देखिला समय रे भी मु देखुतली बहुत स्टूडेंट्स मते फील हैला कि से माने पाठडा पढी नांती और पर्सनली सेटा फील हैला बिकॉज़ तांकर कंटेंट रे सेति कि दम नाही से माने बहुत ही गोटे जनरलिस्टिक वे रे लिखि जंदी सो सबले ट्राई करो तमे एथिक्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट एंड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बट दैट डजंट मीन कि तमे पाठ बाहर खाली माने जनरल कन्वर्सेशन टाइप रो तमे लिखि चलिबो गोटे स्पोकन इंग्लिश टाइप रो लेखनी केबे भी आंसर तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पचार जे से क्वेश्चन रो जो वर्ड गुडा अछि तार जो लैंग्वेज अछि ट्राई करो से शब्द गुडा को यूज करिया पे तार लैंग्वेज गुडा को यूज करिया पे ओके जदि एनवायरमेंटल एथिक्स पचार तो तमे निजको जदि गोटे मनगणन इमेजिनेशन लिखिबो कि ना एनवायरमेंट अछि एथिक्स अछि तमे दीदी जाको जोड़ी दबो कहबे जे ना एनवायरमेंट आ एथिक्स एनवायरमेंट इमति करबा सेमति करबा सेटा बहुत ही गोटे जनरलिस्टिक फील हो जे भी पढिबो से जान दबो जे नाही तमे पाठडा भलो रे पढिनो ओके तो ट्राई करो टिके से शब्द गुडा को जेमति फॉर एग्जांपल व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स पचारछि ये होछि प्रथम पार्ट एंड व्हाई इट इज क्रुशियल टू एग्जामिन काहे कि हमें अधिक या विषय जानिबाटा काहे कि इंपोर्टेंट examine one environmental problem from the perspective of environmental ethics okay so 10 मार्क पचारि केमति लिखिबा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ब्रीफली दबा environmental ethics delves into complex relationship between humans and natural world exploring our moral obligations towards the environment and its inhabitant तो we as a human being हमर गोटे moral obligation अछि हमर गोटे दायित्व अछि environment पाई आउ environment रे जेहेतु मनुष्य गोटे श्रेष्ठ प्राणी आमको छाड़ी देले एनिमल माने रहउछन समस्त को टेक केयर करिवार हमर ही दायित्व
सो एनवायरमेंटल एथिक्स रे हमें सेही जिंस गुडा कहिबा एंड एठी कोन दबा कि इट एग्जामाइन्स द वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन एंटिटीज एंड इकोसिस्टम्स questioning the anthropocentric perspective that prioritizes human needs and desire above all else. तो ये आम व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स आम ताको एड्रेस करते सेकंड पार्ट कौन कही कहीं तुम एग्जामिन कर व्हाई वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस एंड सेटा एनवायरमेंटल एथिक्स को इंपैक्ट करूची पॉजिटिव वे रे कि नेगेटिव वे रे देखो जहां तुमको क्वेश्चन पचार सेमती ही आंसर दबो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट सो गोटे 10 मार्क क्वेश्चन रे तीनटा छोट छोट डिवीजन हेगी अछि फर्स्ट पार्ट आम एड्रेस कले सेकंड पार्ट रे कोन जो एग्जामाइन करिया पे से कहै छी सिग्निफिकेंस तुमको जानिया पे कहै छी कोन फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ओके से ता ऊपर दो तीन लाइन लिखिबो कि आवर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैव लेड टू क्लाइमेट चेंज बायोडायवर्सिटी लॉस pollution jeopardizing the planet's health etc second promoting intergenerational justice आज जो आमे पृथ्वी रे रहुचे आज जदि आमे प्लास्टिक अधिक करबा आज जदि आमे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करबा हमर नेक्स्ट जनरेशन पई तो किछ नथिबो सो आमको एमती प्रैक्टिस गुडा करिया पड़ियो जोडा कि नेक्स्ट जनरेशन 50 वर्ष 100 वर्ष कि 200 वर्ष सेपनक पई जेमती गोटे सेफ एनवायरनमेंट आमे तैयार करि परिबा नेक्स्ट होची एनरिचिंग ह्यूमन वेलबीइंग A healthy environment is essential for human well-being, providing us with clean air, water, food, resources, etc. तो आमे एग्जामिन काहे करछे बिकॉज़ दीज आर द पैरामीटर्स सेति भाई आमे ताको एग्जामिन करूछे थर्ड पार्ट रे से कोन पचारछि कि गोटे एग्जांपल देई कि तार तमे रिलेशन ताको ठीक एक्सप्लेन करो गोटे केस स्टडीज आमे नै गेले एठी कोन डिफॉरेस्टेशन थ्रू द लेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स द डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रॉब्लम ओके तो डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पलाइज द अर्जेंसी ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स the clearing of forest for agriculture, logging, other purposes disrupts the ecosystem, releases greenhouse gases, threatens endangered species. Examining these issues through the environmental ethics lens reveals the ethical implications of our action. कौन first होची instrumental versus intrinsic value. While forests provide economical benefit, they also possess intrinsic value beyond human utility. They are vital for maintaining biodiversity, regulating climate, purifying air and water. Next, future generation. Then animal welfare. तो आमे आगो कि गोटे केस स्टडी हिसाब रे गोटे एग्जांपल रे देखि देले. So then what is the conclusion? Conclusion आमे कोन लिखिबा कि embracing environmental ethics is not simply a philosophical exercise, it is a call to action. So there is no question कि आमे करिबा कि न करि, you have to do it. So there is a call to action. By recognizing our moral obligations towards the natural world, we can build a more just and sustainable future of all. This is how you should write. जदि तमे माने एठी किछि एडिशन करिया पे चाहो यू कैन डू दैट सपोज कॉप 28 विषय जदि तमे रिसेंटली जोटा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाइथिले यूएई को ता विषय जदि तमे दी लाइन लिखिबो कर दियो किछ असुविधा नै भलो होबा आउरी ओके सो तमे ए भला टिके ट्राई करो लिखिया पे आ गोटे देखिबा एटा गोटे यूपीएससी रे पचारथिला हमर क्वेश्चन सिविल सर्विस यूपीएससी रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसी कि ethics is knowing the difference what you have the right to do and what is right to do. So what is ethics? Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. तमे तम पाखरे कोन अधिकार अछि आ तुमको कोन करिवा दरकार अगेन मु कहि रखबी ए यारो आंसर ता दबा पूर्व एटलीस्ट कम से कम तुमको एटा तो जानिया दरकार कि किए स्टेटमेंट ता कहि छी ये स्टेटमेंट के कहि छी कि पोर्टर स्टीवर्ड्स आई थिंक मैक्सिमम पिलांकर आंसर मु देखि छी एक्सेप्ट जणे ना दि जण छाड़ देले आ किए भी लिखि नांती अंकना सो पोर्टर स्टीवर्ड्स प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स जो कहि छथि किए कहि छथि ये कहि छथि पोर्टर स्टीवर्ड कहि छथि ओके सो अंकर कहिवार अर्थ कोन इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग it emphasizes the legality and morality are not always synonymous सबोले legality जोडा legal सेटा moral हबो बोली सबोले सेटा माने नुह while legal boundaries provide a baseline true ethical behavior transcends the moral legal complex so जदि हमें true ethical behavior कथा कहिबा खाली legal ground रे तो ठीक हेला हेबनी but moral ground रे भी ठीक होबागो पड़िबो ओके सो एठी हमें कोन आ एक्सप्लेन करिवा The significance of distinctions lies in inheritance limitations of law. Laws often lag behind societal evolution. What is the biggest problem of law? Law or सबुठ बड़ा problem कोन
कि सोसाइटी जो रेट रे एडवांस होउची लॉ गुडा से रेट रे चेंज होउनी तेबे प्रॉब्लम कोन हो जदी सोसाइटी जदी करंट सिनेरियो पई जदी सोसाइटी रे यू नो एते एडवांस हे जाई जी सो एथिकल जदी मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू रो सेटा जदी करेक्ट बट ता पई लीगल सपोर्ट न करि थाई पारे किबा लीगल साइलेंट थाई पारे तो सेही केस रे हम कोन करिया पर सेही केस रे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मो पाखरे कोन पावर अछि मते कोन करबा दरकार सो नेक्स्ट देखो आउ कोन लिखि परिबो किछि किछि एग्जांपल भी एठी मु लिखि छी महात्मा गांधी कोन कहिसंती कि एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग दिस होल वर्ल्ड ब्लाइंड देखो खाली तमे कोड लिखि देले होबनी से कोड ता केमिति रेलेवेंट तमरो आंसर पई सेटा भी टिके मेंशन करिवो सेति में देखो ए जो कोड ता लिखा है जे एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड so this quote emphasizes the importance of seeking non-violent solutions and prioritizing forgiveness over revenge even when legally justified बुझी पारछ तो जो क्वेश्चन पचार मु खाली कोड लिखि देले होबनी कि सर मु कोड लिखि दी सरी गेला यू नीड टू गिव अ बिट कोन से कोड रो अर्थ कोन आ से कोड ता केमिति कनेक्ट करूचो से क्वेश्चन सहित दैट इज इंपोर्टेंट आ गुड देखिबा जेमति फॉर एग्जांपल चाणक्य कहिसनि कोन कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो who has wealth both are equal powerful so this quote highlights the potential for corruption and unethical behavior when wealth and power overlap reminding us to remain vigilant in our pursuit of ethical action Swami Vivekananda kon kahishanti arise awake and stop not till the goal is reached this quote encourages us to strive for continuous self improvement and to use our knowledge and abilities to uplift others even when faced with ethical challenges so look at this तो एठू गोटे जिंस तमे एठू आज कोन सिखिलो कि खाली जो आमे कोड गोडा दे देले से कोड ता ता सहित रेलेवेंट भी होवा दरकार से क्वेश्चन जहा पचार से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सहित भी सेटा सिनोनिमस होवा दरकार आ जदी तमे कोड दोचो गोटे दिन लाइन लेखो कि हाउ दिस कोड इज रेलेवेंट जेमति एठी मु तमरो किछटा जिंस मेंशन करै छी सो फाइनली एठी कोन लिखिबो कि बाय एम्ब्रेसिंग द एथिकल लेंस फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स कैन राइज अबव मियर लीगल कंप्लायंस सो एठी तमे कोन दोचो टिके एंगल दे दोचो future civil servants can rise above mere legal compliance and become exemplary leaders who prioritize the well-being of citizens and uphold the highest moral standards in their service to the nation. So, this is how you should write an answer, especially जदि क्वेश्चन टा पड़े यार विभिन्न प्रकार उपाय अछि विभिन्न प्रकार तमे वे रे तमे लिखि परिबो बट अल्टीमेटली पर्पस तमरो सॉल्व होवा दरकार तमे जो भी वे रे लिखुछो यू नीड टू जस्टिफाई हां प्रथम क्वेश्चन देखिबा केस स्टडीज टा मु टिके क्विकली पढ़ि दउछि खाली Rahul and Priya are close friends who have been studying computer science together at a prestigious university in India. Rahul Priya दुई जण बंधु जे कि कंप्यूटर साइंस पढुछंती. Rahul has been struggling with the coursework and is on the verge of failing one of the critical course required for the graduation. माने ग्रेजुएशन हवा पे प्रोबेबली सेमेस्टर रे परीक्षा अछि एतो सेमेस्टर मेंशन करा हैनी मोर इमेजिनरी कहूची तो जेमती तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करिया पे तुम सब सेमिस्टर रे तुमको पेपर क्लियर करिया पड़िबो मे बी राहुल सेते भलरे पढिनी तो सेति पे ताको फील होची जे से फेल हे जिवो प्रिया ऑन द अदर हैंड हैज कंसिस्टेंटली एक्सेल हर स्टडीज देखो एठी भी जियो माने सिंसियर असुंदी बो माने सिंसियर नाते ना एनीवेज सो प्रिया कोन करची प्रिया तार स्टडी रे बहुत भलो अछि जेतोले एज फाइनल एग्जाम अप्रोचेस एटा बहुत सिंपल ओके एते कॉम्प्लिकेटेड न हो बहुत सिंपल तो मु देछि as the final exam approaches Rahul approaches Priya Rahul Priya पाखु जाउची एवं कहूची कि confides in her about academic challenges सी ताको एक्सप्लेन करची कि देखो मोर पढा भलो रे हेनी मु कोन करी मु किछि बुझी परनी मते किछि भी आसुनी मते लागुची मु फेल हे जी परीक्षा रे he explains that failing the course would mean delaying his graduation सी ताको कहूची जे कि प्रिया जदी मु फेल हे जीबी ताले मोर ग्रेजुएशन ता पुनी अथर डिले हे जीबो वर्षे causing disappointment to his parents who have high expectations of him सो जदि सी ग्रेजुएशन रो फेल हे जिवे पुनी गोटे वर्ष जदि डिले हे जिवो एक्सटेंड हे जिवो तारे तांकर पेरेंट्स राहुल रे जे पेरेंट्स अछन बहुत ही तांको खराब फील हो बिकॉज़ तांकर एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक तो राहुल प्रिया को रिक्वेस्ट करूची प्लीड करूची कि शेयर हर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वर्क जहां भी प्रिया को प्रोजेक्ट वर्क अछि ताको ताको शेयर करिया पे व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ फाइनल असाइनमेंट तो प्रिया जो फाइनल असाइनमेंट सबमिट करिवे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रे फोर्थ ईयर रे गोटे प्रोजेक्ट थाए से फाइनल असाइनमेंट ता जदी सबमिशन रो मेजॉरिटी जिंसो सी कहउछन मते शेयर करो ओके तो एठी देखो एठी तमे मैक्सिमम पिला मु देखि छी गोटे कि तमे एठी कोन कोन मु ऑब्जर्व करछि मु कहि तो प्रथम जिंस मु गोटे जिंस ऑब्जर्व करछि तमे ने लिखिछो हु आर द पार्टीज इन्वॉल्वड
देखो यूपीएससी रे स्पेसिफिकली से पचारे कि व्हिच आर द पार्टीज इन्वॉल्व सेतବେଳେ तमे डिटेल रे मेंशन करो अदरवाइज इट इज नॉट इंपोर्टेंट कि किए पार्टी इन्वॉल्व अछंती कि राहुल प्रिया एटसेट्रा इट इज नॉट इंपोर्टेंट जदि तुमको क्वेश्चन पचार कि किए पार्टी इथरे इन्वॉल्व अछंती देन यू मेंशन अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी तुम लिखिले चलिबो बट इट इज नॉट नेसेसरी द्वितीय जिंस तुमको जेमती क्वेश्चन पचार डायरेक्टली तुम सेमती आंसर दियो क्वेश्चन कौन पचार आइडेंटिफाई द मोरल डिलेमा फेस्ड बाय प्रिया किसी पिला को देखी से मोरल डिलेमा रे देखी इश्यू ऑफ लॉयल्टी इश्यू ऑफ इंटेग्रिटी इश्यू ऑफ ऑनेस्टी डू नॉट गिव वेग आंसर्स वेरी स्पेसिफिक रुह कौन लिखिबो कि प्रिया फेसेस ए सिग्निफिकेंट मोरल डिलेमा सी हैज टू कॉन्फ्लिक्टिंग ओब्लिगेशंस प्रथम मोरल डिलेमा कौन फ्रेंडशिप टाको हेडिंग दे दबो ता अंडर रे कौन कि एज ए लॉयल फ्रेंड सी वांट्स टू हेल्प सी राहुल को हेल्प करिया पे चाहूची तार कष्ट को सी दूरेया पे चाहूची किंतु जदि सी निजर शेयरिंग हर प्रोजेक्ट वर्क वुड सॉल्व हिज इमीडिएट प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग द कोर्स सो जदि बंधु हिसाब रे हम देखिबा जदि सी तार निजर प्रोजेक्ट वर्क टाको शेयर करिवो ताले प्रॉब्लम कोन हबो इमीडिएटली राहुल जहा प्रॉब्लम फेस करूची सी प्रॉब्लम टा दूरेई जिवो किंतु आ गोटे एथिकल डिलेमा कोन एकेडमिकल इंटीग्रिटी as a student she has the responsibility to uphold academic integrity and avoid any actions that could be considered as cheating okay so प्रियार जेहेतु सी निजे भी गोटे स्टूडेंट सी एमती किसी काम करिया कथा नुह जोटा कि एज ए चीटिंग हिसाब रे कंसीडर करा हबो जदी सी तार काम गुडा राहुल को दे दबो राहुल को कॉपी कर दबो कॉपी करले कोन हला चीटिंग हे गेला से जिंसटा तो चीटिंग चीटिंग तो दुई प्रकार रो जे कॉपी करिवो सी भी चीटर और जे कॉपी करिया पे सुजोग देई जे सी भी चीटर स्पेसिफिक जहां पचाची सो दिस इज द एथिकल डिलेमा एबे कोन नेक्स्ट क्वेश्चन को पचाती कि एनालाइज प्रियास रोल एंड ड्यूटीज एज ए फ्रेंड एज स्टूडेंट एंड सजेस्ट हर कोर्स ऑफ एक्शन अगेन जहां पचाची से आंसर सो प्रियांकर रोल कोन जो दीटा डिलेमा फ्रेंडशिप अंडर रे कोन करिवो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी प्रिया शुड एक्नॉलेजेस राहुल्स एंजाइटी एंड डिजायर टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड यार गोटे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से कौन करि परिबे ओके यार अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली शेयरिंग हर वर्क प्रिया कुड ऑफर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लाइक ट्यूटरिंग कोलैबोरेटिंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट और फाइंडिंग रिसोर्सेज टू हेल्प हिम इंप्रूव हिज अंडरस्टैंडिंग तो सी डायरेक्टली निजर एकेडमिक वर्क टा को शेयर न करी कि अल्टरनेटिवली से कौन करि परिबे कि सी अलगा किसी कोचिंग दे परिबे ट्यूशन टिके दे परिबे ताको हेल्प करि परिबे किमा गोटे नुवा प्रोजेक्ट रे ताको सी हेल्प करि परिबे नेक्स्ट एकेडमिकल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करिया पे कोन कॉन्सिक्वेंसेस को शेयरिंग हर वर्क हमें ऑलरेडी जानि छे कि डिले ग्रेजुएशन डैमेज रेपुटेशन setting an example as a student Priya serves as a role model for others upholding academical integrity is crucial for creating a fair and just learning environment सी जो एई जो डिसीजन टा पाई सी कोन कले सी निजर इंटीग्रिटी को जतल अपहोल्ड करिवे सी विल बी एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो सो व्हाट आर द सजेशन कोर्स ऑफ एक्शंस कोन करा जिबा दरकार व्हाट प्रिया शुड डू ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन प्रिया क्लियरली किछि आ न लुचे कि राहुल सहित एक्सप्लेन करिवो कि सी देखो मु जेन्युइनली चाहू छी तुमको हेल्प करिया पाई बट एई जिंस गुडा मो माइंड रे चली छी एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव रे कोन कोन सॉल्यूशंस हेई पारे सेई जिंस गुडा को ताको एक्सप्लेन करि परिबे confidentiality Priya should maintain confidentiality throughout the situation and avoid discussing Rahul's academic struggle with others राहुल जो एकेडमिक स्ट्रगल फेस करछन सेटा अन्य कहा सहित जदि गॉसिप से करिवेनी seeking guidance if needed Priya can seek guidance from other trusted advisors such as professors counselors etc so this is how you should write a case studies yes पचार कि कोन क्वेश्चन पचार तो पचार दियो